अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के जो एमसीक्यूज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एमसीक्यूज की तरफ जाने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल स्टडी विद सवराहान को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए जी एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल मूव रेगुलरली फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द cytoplasm? A. Glycogen, B. RNA, C. DNA, and D. Both RNA and DNA. So the correct option is B. नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है, unless the cell is dividing, the DNA and proteins are greatly elongated and appear a clump of strand material called a nucleolus, B. chromosome, C. chromatid, and D. chromatin. So the correct option is D. नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है, मेटाबॉलिज्म एंड द सेल इज सेव ड्यू टू ए न्यूक्लियस, बी डीएनए, सी compartmentalization, and D RNA and ATP. So the correct option is C. नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है, which breaks complex macromolecule e.g. polysaccharides and proteins etc. A. Lysosome, B. Golgi complex, C. Rhabdoplasmic reticulum, and D. Mitochondria. So the correct option is A. Lysosome. नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन सेल ब्रेकडाउन ऑफ अ सेल इज कॉल्ड ए ऑटोलाइसिस, बी ऑटोपैगी, सी exocytosis, and D phagocytosis. So the correct option is A, autolysis. The next MCQ is, the bacteria are A. haploid, B. triploid, C. diploid, and D. polyploid. So the correct option is A, haploid. Next MCQ is, proteins are glycosylated in A. Rhabdoplasmic reticulum, B. Golgi apparatus, Golgi complex, and D. C. ribosomes, and D. Smooth endoplasmic reticulum. So the correct option is B. The next MCQ is, the stack membrane and the chloroplast are called A. thylakoids, B. grana, C. lamella, and D. stroma. So the correct option is A, thylakoids. The next MCQ is, proteins they are to be used outside the cell are synthesized A. on drop endoplasmic reticulum, B. on smooth endoplasmic reticulum, C. on mitochondria, and D. on free ribosomes. So the correct option is A. The next MCQ is, Golgi complex is concerned with cell A. excretion, B. secretion, C. digestion, and D. division. So the correct option is B. The next MCQ is, microbodies are A. peroxisome, B. mitochondria, C. glycoxysomes, and D. both peroxisomes and glycoxysomes. So the correct option is D. Thanks for joining me. I hope these MDCAT MCQs help you sharpen your knowledge. Keep studying and stay tuned for more practice questions. Thank you. Allah Hafiz.